Students, today we are going to start with a new grammar topic, that is adjectives. Adjectives are describing words. An adjective is used to add something to the meaning of a noun or pronoun. In other words, it describes a noun or pronoun in a sentence. So students, वो words जो हमें किसी person, place, थिंग या एनिमल की क्वालिटी के बारे में बताता है, दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स. सो एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Alok won 3 prizes. Here, the quality of Alok is that he won 3 prizes. So, 3 is an adjective here. The story is short. The quality of story is that it is short. So the word short is adjective here. Students, there are different kinds of adjectives, but we will study only 5 kinds of adjectives. They are as follows: adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, demonstrative adjectives, interrogative adjectives. So first one is adjectives of quality. An adjective which tells us of what kind a person or thing is called an adjective of quality. An adjective of quality answers the question what kind of. So वो वर्ड्स जो हमें किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी के बारे में बताता है या उसकी काइंड के बारे में बताता है कि वो पर्सन या थिंग किस तरह का है, उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ड्रेस इज कॉस्टली. Here the quality of the dress is that it is costly. So the word costly is adjective of quality. Second example, the road is narrow. Here the quality of the road is that it is narrow. So the word narrow is adjective of quality. Next is adjectives of quantity. An adjective which tells us how much of a thing is meant is called an adjective of quantity. An adjective of quantity answers the question how much. Students, वो words जो हमें बताते हैं कि ये जो thing है वो कितनी है, that are known as adjective of quantity. Adjective of quantity is used with the अनकाउंटेबल नाउन्स. बेटा वो थिंग्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, with them we use adjectives of quantity. For example, Anshu gave the poor man some food. So here the word some is adjective of quantity. अब बच्चे हम फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट, कि ये 1 है 2 है. So that is why some is adjective of quantity here. Likewise, Ajay has enough money to buy a pen. Adjectives of number. An adjective which tells us how many persons or things are meant is called an adjective of number. An adjective of number answers the question how many. वो words जो हमें किस things या persons को बताता है कि ये कितने persons हैं या कितनी things हैं, that are known as adjectives of number. बच्चे adjectives of number are used with the countable nouns. जिन चीज़ों को हम, जिन persons को हम count कर सकते हैं, उनके साथ हम adjectives of number use करते हैं. For example, the 2 friends have gone to watch movie. Here the word 2 is adjective of number क्योंकि हम उसको friends को count कर सकते हैं. Second example, many people had gathered at the Jantar Mantar. So here the word many is adjective of
नंबर. सो हम बच्चे यहाँ पर उन लोगों को काउंट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई मैनी इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सो बेटा जितने भी नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड many, these are all the examples of adjectives of number. Next is demonstrative adjectives. An adjective which is used to point out some person or thing is called a demonstrative adjective. A demonstrative adjective answers the question which one. बेटा वो एडजेक्टिव्स जो हमें किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, दे आर नोन एज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. This, that, these are all the examples of demonstrative adjectives. For example, this box is heavy. This, here the word this is demonstrative adjective. Second example, these trousers are new. So here the word these is demonstrative adjectives. बेटा वो words जो हमें किसी की तरफ point out करते हैं, they are known as demonstrative adjectives. This, that, these, those are all the demonstrative adjectives. Let me tell you one thing more here. जो हम this और these है, they are used with the things that are near to us, and that and those are used with the things that are far away from us. So this and that are used with the singular noun, and these and those are used with the plural noun. Next is interrogative adjectives. An adjective which, when used with the noun, asks a question is called an interrogative adjectives. बेटा जहाँ पर हमसे कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है वहाँ पर हम interrogative adjectives यूज करते हैं. For example, which book is yours? तो here the word which is interrogative adjectives क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी बुक कौन सी है. Whose purse is lying on my desk? Here the word whose is interrogative adjective because here again a question is asked कि ये मेरे डेस्क पर किसका पर्स पड़ा है. So let us summarize once again. Adjectives of quality tell what kind of color, size, shape, special quality, etc. तो adjective of quality हम एक क्या बताता है कि इस person की या thing की kind क्या है, ये किस तरह का है, इसका कलर कौन सा है, इसकी साइज कैसा है, इसका शेप कैसा है, या इसकी कोई और स्पेशल क्वालिटी के बारे में हमें बताता है. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमें बताता है दैट दिस थिंग इज हाउ मच, ये चीज़ कितनी है. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम, इनफ, मच, एटसेट्रा. Adjectives of number. Adjective of number tell how many, for, many, all, etc. तो adjective of number हमें are used with countable nouns. जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम adjectives of number यूज़ करते हैं जैसे first, for, many, all, etc. Demonstrative adjectives यूज टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स. वो वर्ड्स जो हमें किसी पर्सन या किसी थिंग्स की तरफ हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं या उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दे आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज. So earlier I have told you that this and that are used with a singular noun and these and those are used with a plural noun, and this and these are used
with the things that are near to us, and that and those are used with the things that are far away from us. Interrogative adjectives हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस. बच्चे जहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल विच, वट, वाई, एटसेट्रा. सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड the topic of adjectives and its kind very well. Thank you. Bye.